Five, four, three, two, one, zero. Need no bullets, need no guns, need no swords, need no cannons. This is a fight fought by a common man. Not all wars are fought at the borders. Not all soldiers carry guns. There are some warriors who fight for us day and night without guns and go unnoticed. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each of us must think with deep gratitude of those who have lighted flame within us. On behalf of Sterling family, we have a message to all those on the front lines, risking themselves just to save the lives of people. We may not be on your shoes, but you are brave enough to choose to stay on the battlefield and defeat the virus. You choose to save rather than to be saved. That too, a humble service is a way to be great. Thank you to all frontliners for everything you do. Thank you for being you. You are our heroes. आज के हमारे वार्षिकोत्सव दिवस का विषय है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब? कृतज्ञता मतलब आभार प्रकट करना। आज हम इस कार्यक्रम में अपने कृत्यों द्वारा हमारे असल नायकों का आभार प्रकट करेंगे। मेरा नाम श्रीनिधि विश्वनाथन है। And I am Humaira Asha Sheikh. Today we are going to take you to a different world where we will be thanking our real heroes through our performances. We all are aware that this year was indeed a roller coaster ride for all of us. COVID-19 pandemic has affected educational systems worldwide, leading to the near total closures of schools, universities and colleges. But nothing in this world can stop us from celebrating Annual Day, not even COVID-19. So let us begin with our virtual Annual Day with the lighting of lamps ceremony, a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. आओ हम सब मिलकर इस दीपक द्वारा ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। Thank you. Prayer is an expansion of total faith in the power present within and around us. When we pray with faith, we express it through our sincere thanks to Him. Prayer works wonders. Prayer should spring from the heart. जिस प्रकार किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अपने आराध्य की आराधना करके करते हैं, उसी प्रकार आज हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना द्वारा करने जा रहे हैं। Over to the school choir. गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से
करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंददायी जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंददायी जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Thank you for letting the goodness sparks with your angelic voice. अब हमारे बीच सबका स्वागत करने आ रही है दूसरी कक्षा की छात्रा जुवेरिया। Greetings of the day, honorable guest, respected principal ma'am, PTA executive members, teachers, parents and all my dear friends. On behalf of Sterling family, I, Juveria Sheikh, the student of class 2nd, regard this as an honor and privilege to extend a very sincere welcome to you all for this virtual annual function 2020-21. Thank you, Juveria. अब मैं बुलाना चाहूंगी स्वागत नृत्य की प्रस्तुति के लिए कक्षा 8 से शुभ्रा और प्रेरणा को। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। दिल से सबका स्वागत हम करते हैं।
अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से स्वागतम, दिल से What a lovely performance. Now, I would like to call upon our respected Principal Ma'am, Beena Martin, to present the annual school report. Good morning to one and all present here. Sterling School Nerul aims to be the center of excellence in education using the state-of-the-art technology where the seeds of the all-round development of the children are sown at an early age. I, Mrs. Beena Martin, the principal of the school, take immense pleasure and pride to present to you the report of our activities and achievements for the past 1 year. Vision and mission. Our founder chairman, Honorable Shri Dilip Valse Patil, had the desire to create a dynamic environment to bring out the best of every child in a holistic manner. With learnings focused on the complete development of a child, Sterling School Nerul envisions to be the foundation for creating wise leaders rooted in their ethnicity and culture to create a better future for all. His mission is to achieve the holistic development of students through an excellent academic and physical environment that is conducive to learning, developing creativity and exploration. To create healthy, strong, disciplined, bold and competent citizens who will work for the betterment of the nation. We have significant accomplishments during the session under the dynamic, motivating and proactive leadership and all our dear teachers. The school focuses not only on advanced academics but also on extracurricular and co-curricular activities. Students are trained at a very young age towards incorporating a sense of responsibility, loyalty, team spirit and healthy competition to become graceful and dignified personalities. This academic year began with a prayer service and all new joinees were welcomed to our Sterling family. CBSE results 2019-20. The total number of students who appeared were 35, out of which 6 passed with 90% and above, 16 above 75% and 8 above 60%. The school gained 10% results. We congratulate these students for their excellent performance and extend warm wishes for their bright future. Sterling staff. The most valuable resources that any school can have is its staff. The school collectively has an enthusiastic and dedicated team of 33 teachers in secondary, primary and pre-primary sections. In addition, we have non-teaching and support staff. Their coordination with each other is what enables the school to function smoothly and grow with new perspectives. Innovation is the change that unlocks new value that leads to betterment and success. With this aim, Sterling School Nerul continues to strive towards innovation and the latest practices in the field of pedagogy are being continuously incorporated in day-to-day activities. Parents-Teachers Association. A general body meeting of parents is held on regular basis and new members of the PTA were nominated for the year 2020-21 in the month of April. Since then, the PTA meetings have been arranged periodically and each and every PTA members of our school are closely involved in most of the school academic activities. We thank and congratulate them for their support and cooperation throughout the year. Academic activities. Competitions and academic activities that go beyond the textbooks and the classrooms encourage and foster a healthy and competitive spirit and effective communication skills in the students. The activities are conducted at classroom level, school level and inter-house level. Some of these activities are
handwriting, essay, speech, slogan writing competitions, etc. Competitions are also held for poetry recitation, story writing and narration, debate, English and Hindi elocution, GK and maths quizzes, etc. E-certificates were given to all the winners. Science, maths, social science, Hindi and English Olympiads are conducted regularly every year and the students perform excellently at local as well as national level. During this session, Master Yash Nitesh Tulsian bagged a gold medal in the International Olympiad of Science and Maths and qualified for the second round. Art integrated and learning has been a hallmark of the school even before the CBSE mandated it as compulsory. An elaborate art exhibition is conducted every year which draws a lot of attraction and students willingly contribute to its success. This year, the theme of the exhibition was COVID-19. Value-based education is given for self-development and personality development. This is done with the aim to inculcate in students values like honesty, gratitude, forgiveness, kindness, etc. In addition, throughout the school year, on every working day, assemblies are conducted on a wide variety of value-based themes and topics. Trainings, seminars, orientation and counseling. Each academic year, trainings, seminars and orientation programs are conducted for teachers and students with a dual focus to improve and effectively implement innovative ideas in teaching learning practices as well as to take the students beyond their current level of learning. Co-curricular and extracurricular activities. These are an essential part of the life of an educational institution as they strengthen the classroom learning as well as develop the personality of the child and harness the in-depth potential of students. The activities are conducted throughout the year. Some of these activities are fancy dress competition, flower arrangement, card making, best out of waste, poster making, chart making as well as dance competitions. Food festivals were also conducted in the food carnival. Participation by the students, parents and teachers in these events was commendable. It is said that you must practice like you never won and perform like you have never lost. Games and sports competitions. When students are physically fit, they will achieve more academically. Games and sports develop a sense of friendliness among the children and also build their team spirit. It helps children to develop mental and physical toughness. Bearing this in mind, the school provides ample opportunities for students to perform regular exercises and yoga and to play and prove their mettle in various sports and games. Celebrations. Life is a celebration, we just need persons to celebrate it. To foster national integration, international understanding, religious and cultural awareness and tolerance, various national, religious and cultural festivals and occasions were celebrated with due pomp. National festivals. Independence Day and Republic Day were celebrated with due reverence to our motherland with patriotic songs and dances. Religious festivals. All religious festivals like Eids, Muharram, Diwali, Ganeshotsav, Parsi New Year, Buddha Purnima, Easter, Guru Nanak Jayanti, etc. are celebrated throughout the year with due respect to the religious sentiments of our students and parents. Other celebrations. The school gives due recognition to significant global events and celebrates these days. Some of these events are International Women's Day, International Workers' Day, Hindi Divas, Yoga Day, World Peace Day, World Hunger Day, Shivaji Jayanti, Road Safety Day, Save Our Planet Day, Girl Child Day, Science Exhibitions, etc. Online study during COVID-19. The nationwide lockdown following the COVID-19 pandemic has led to a burst of activities with online education. The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, over 1.2 billion children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms.
At Sterling, teachers and coordinators are regularly in contact with the students and parents and taking the online classes regularly. Students are also studying through online learning programs. Apart from this, students are given various other extracurricular activities such as drawing, cooking, singing, dance, etc. on day-to-day basis where they can carry out at their home, and to encourage them, we put their videos on social medias and websites. We at Sterling believe that every year brings changes with God Almighty's protection. As we are passing through an unprecedented crisis situation in this academic session, we are confident that we will overcome all the odds by our strong will and ethics and pave the way for the betterment of education, fraternity and the society in general. Towards this, we have started our online lectures from the 1st April 2020 using various innovative tools to facilitate learning by the students. Before I conclude, let me assure you that even though our students engage themselves in various co-curricular and life skill activities, top priority is given to academic performance. Remedial teaching, extra classes, revisions, unit tests, class test assignments, project works, end of term exams will be keeping them busy throughout the year. I render thanks to our management, our teaching and non-teaching staff and my students and parents who have been with us in all our activities with maximum support and cooperation. With this, I conclude the school report. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, ma'am. Sterling students have proved that they are talented in all streams, and now it's time to acknowledge the talent of our brimming buddies. I request Kirandeep ma'am to announce the winners. A very warm and pleasant morning to our honorable guest, Principal ma'am, teachers, wonderful parents and all those who are present here. It's a pleasure to be in the company of such enduring audience. Awards do not only acknowledge success, they recognize many other qualities: ability, struggle, effort and all above, excellence. It's time now to give Excellence in Academics Award for the year 2019 to 20 to our deserving students. I request the parents of the students to come on the stage to give away prizes to their wards. Now, I request Miss Ikra Mohammad Shoaib Sheikh from Junior Master Lishan Mohan Nayak. From the list, it's a Senior Secondary Miss Vaishnavi Nilesh Kullat. Next, the first standard from first standard Miss Juwaria Arshad Sheikh. Next in the list, the second standard Master Arhan Samir Nayak to come upon the stage. From standard third, Master Parshuram Savanur. Next in the list, standard fourth, Miss Nidita Bansod. Next in the list, from standard 5th, it's Miss Usha Savanor. From standard 6th, Master Aditya Samant. Next, from standard 7th, Miss Prerna Kate. Next, from standard 8th, Miss Tazeen Ansari. Next, from standard 9th, Master Yash Yadav. Next, from standard 10th, Master Rishikesh Bathil. Thank you everyone. Congratulations to all the winners. I request respected Avinash Shinde sir to kindly say a few words. Yeah, good morning to all of you. Dr. Ashok Patil, Trustee NCRD, Principal of the school, then all the parents, students and teachers, staff of the school and dear students. It is a great pleasure to be amongst you this morning for the annual social gathering. Well-planned school gathering provides opportunities beyond the classroom for learning and achievement.
students keen to translate classroom behavior and public speaking and grow a vision of themselves as a contributing members of larger community. Gathering can spread community values throughout the school and motivate students to do their best. For most successful gathering do not happen overnight. They take planning, persistence and a willingness to experiment, regroup, reflect and try again. But I think you will find the results will well worth to the efforts. Every year this event takes place and always the principal and faculty try to do something new, different and better. The occasion is not only entertainment as it is always seen, but it teaches to the school so many things, helps to bring out the talent, capacity and capability of all the students and teachers, which is otherwise not possible in the daily classroom routine. Due to this pandemic situation, not in a position to meet personally, but with certain precaution, we are celebrating the annual day. Corona is not yet disappeared. Please take care of yourself and your family. I wish all of you for this function and best luck for your future and best wishes for the coming exams. Thank you. Thank you very much, sir. Your motivations and thoughts set a very perfect platform for all of us. I request Ashok Patil sir to kindly say a few words. Very good morning, everyone. This is the day we are waiting eagerly every year, and we management also are very eager to see the talent of the students. At the same time, the teaching staff and non-teaching staff takes lot of efforts for organizing this event. And apart from curricular activities, these extracurricular activities are also equally very important. And I don't know, but I will give 100% marks to English medium Sterling School for organizing a very nice annual day. So I wish all the best for Udan 2021 and enjoy the event. We never imagined that this situation will arise and we will have to do this in such a manner. But natural calamity is there and we have to face that. We have gone through a very stressful year, but let us be hopeful and optimistic. So I wish once again all the best for this event. Thank you. Thank you, sir. बचपन शब्द सुनते ही हम सबके चेहरों पर सजी खुशी, प्रसन्नता, चंचलता झलक उठती है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे स्टर्लिंग स्कूल के नन्हे मुन्ने खिलखिलाते फूल सीनियर केजी के छात्र 2021 में इस वर्ष अपने जीवन की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने वाले हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपने जीवन की सीढ़ियाँ बिना किसी विघ्न बाधाओं के निरंतर चढ़ते रहें। Our little toddlers are going to graduate today. So let's start with the ceremony. Aradhya Praveen Sejwal, Aditya Atul Amre, Aditya Rajendra Patil, Akshar Liladhar Nayak, Ali Kashif Nazir, C. Anirudh Guhan, Ansh Munusway Jairam, Arhan Kamruddin Molla, Atharva Sudhakar Balshankar, Avni Anil Bhagat, Dikshant Rahul Wagmare, Faiz Irfanullah, Ifra Feroz Khan, Jia Pranav Talajia, Kartik Nilesh Kullat, Kavya Deepak Chaurasia, Keshika Srinath Tondula, Lamia Abdul Rashid Sheikh, Lishan Mohan Nayak, Malak Mohammad Shah Inamdar,
मानस वैभव नायक, मोहम्मद आहिल खान, मोहम्मद शीस खान, नंदिनी विजय कदम, परिणीति राहुल कामले, प्राक्षी जितेश मानवी, पृथ्वी ऋषिकेश कुमावत, पूर्वी अभिषेक घोसले, पुष्पक मोरेश्वर कडू, रोमित रोहिदास नायक, स्मृथा ध्यानेश्वर येवले, शरण्या संतोष पादरे, शौर्या सुंदरलाल यादव, श्लोक भगवान मोठे, श्रीयान सुभाष सावंत, सृष्टि किशोर मोरे, सिद्धार्थ सिंह तोमर, सृष्टि दीपक पोखरे, तैबा मुस्ताक शेख, विघ्नेश संतोष कदम, यश गौतम झंझार, यूसुफ मोहिउद्दीन शेख, जैनब नजीम शितवारे, वरद महेश पवार, इद्रिस सिद्दीकी। One year older, 1 year wiser, 1 year taller and stronger and brighter, 1 step closer to being the best that I can be. Thank you for helping me. 1 year older, 1 year wiser, 1 year taller and stronger and brighter, 1 step closer to being the best that I can be. Thank you for helping me. Our lights are burning bright, knowledge is our guiding light. Happy graduation day, we have come such a long way. Our lights are burning bright, knowledge is our guiding light. Happy graduation day, we have come such a long way. We have come such a long way. We have come such a long way. I request Ansh Jairam from Senior KG to share his pre-primary experiences. Principal, teachers, parents and all my dear friends. Today we are here to celebrate the graduation day. My name is Anjaram. I am studying Senior KG, third street of Sterling School. I would like to share my beautiful experience of my pre-primary school. My first day in school was bit scary. We were warm welcome and learned from first day. DJ allowed coming to school. Star is smiling on our little hand with a memory future. Thank you, Principal Ma'am, Shine Ma'am, Principal Ma'am, Anjit Ma'am, Baljeet Ma'am, Jagruti Ma'am, for your love and encouragement. Thank you. Thank you, Ansh. Now I request Ifra Khan to deliver the vote of thanks. Respected Principal Ma'am, teachers and my dear friends, I am Ifra Firoz Khan of Senior KG. On behalf of all my friends, I would like to thank all our
The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, lights and joy. So let us start with our cultural extravaganza prepared under the guidance of our highly experienced teachers. क्या तुम जानती हो रेट्रो थीम का मतलब क्या है? रेट्रो थीम? नहीं तो हम बताते हैं। ये होता है बीते ज़माने का फैशन जो अब लौट कर आ गया है। तो चलिए देखते हैं। Here comes our cute kids from nursery to second standard with the retro theme. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 rock and roll। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है गोल। अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, जरा मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल। दिल में बस जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल। बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल। बोल बाबा बोल, बोल बोल बाबा बोल, जरा मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल। आँखों से कर बातें बोल, नजर की बोली बोल। अरे बोल बेबी बोल, बोल बाबा बोल। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे
कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, कोई वहाँ आहा नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवां आहा नाचे नाचे। औवा 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 औवा, कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई वहाँ नाचे नाचे, सारे हंसी नाचे नाचे, सारे जवां नाचे नाचे। औवा औवा, तुमसे है तुमसे प्यार, औवा औवा, मानो ना मेरे यार, औवा औवा, तुमसे है तुमसे प्यार। ये जवानी तररुरु है दीवानी, तररुरु ररररा ररररा zu 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 zu। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। हे हे गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, बिली 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 बिली, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, गिलगिली अखा, बिली 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 बिली। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। देखो तौबा तौबा, बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। Wow, what a mind-blowing performance. क्या तुम छलांग का मतलब जानती हो? Yes, to jump up high. हाँ हुमैरा, पर इसके और भी कई अर्थ होते हैं, जैसे अपने सपनों की तरफ छलांग लगाना अथवा अपने सपनों की तरफ उड़ान भरना। Please welcome students of 3rd and 4th standard for the beautiful dance performance on song Chalang. गिर के देख तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख। जरा गिर के देख तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख। मैदान
लगा मिट्टी माथे और ले छलांग 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 और ले छलांग। लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है, लिखी है जो हाथों पर वो बस लकीर है, लिखनी आसमानों पर अपनी तकदीर है। पूछा है उसने तुझसे जाया न कर ये मौका, छीन ले अपनी किस्मत, है किसने तुझको रोका। अपनी कमजोरियों की हर हद तू लान, लगा मिट्टी माथे लगा मिट्टी माथे लगा मिट्टी माथे और ले छलांग 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 और ले छलांग। माथे पे जो ये बल है का गाढ़ा दलदल है, दलदल पे भागना है, हर तीर दागना है। चीर दे अंधेरा ऐसी दे बात, लगा मिट्टी माथे लगा मिट्टी माथे लगा मिट्टी माथे और ले छलांग 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 और ले छलांग। Wow, what a great performance! जिसने सृष्टि का निर्माण किया वह कहलाए सृष्टिकर्ता। वे जो हमें इस दुनिया में लेकर आए वह हुए हमारे जन्मदाता, और वह जिन्होंने जीवन चलाने के लिए हमें अन्न प्रदान किया वह कहलाए हमारे अन्नदाता यानी के किसान। Right, Srinidhi. The ongoing health crisis around COVID-19 has affected all walks of life. But our farmers are working hard day and night to provide us food. जी हाँ, सब कुछ मानो थम सा गया है, पर हमारे किसान आज भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। वह कभी नहीं रुके। किसानों की इसी प्रेरणा स्रोत को लेकर आ रहे हैं 5वीं और 6ठी कक्षा के विद्यार्थी। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,
धरती, मेरे देश की धरती। धूप है, छाँव है, जलते तेरे पाँव हैं, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है, जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। धन की आस कहाँ होती, वो जीवन सादा ही जीता है। उसको धीरज कौन बंधाए, अपने आंसू खुद पीता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। वो किसान है खुद मिट कर जो जग का पालन करता है। बारिश हो या धूप कड़ी हो, अपना कर्म वो करता है। जाने कौन घड़ी में मालिक उसकी किस्मत को लिखता है। मिट्टी में पैदा होकर वो खुद मिट्टी नहीं मिल जाता है। पेट हमारा भर कर वो तो खुद भूखा सो जाता है। कर्मशील है, दानी है वो, बन दधीची तन दे जाता है। वो किसान है खुद मिटकर जो जग का पालन कर जाता है। That was indeed very emotional. अब हमारी अगली प्रस्तुति है अल्लाह के बंदे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमारी अगली प्रस्तुति मनमोह लेने वाली सूफियाना अंदाज में है। अब मैं बुलाना चाहूंगी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर। ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा।
खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो, खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। That was a mesmerizing performance. In this crisis, teachers have shown, as they have done so often, great leadership and innovation in ensuring that learning never stops, that no learner is left behind. Around the world, they have worked individually and collectively to find solutions and create a new learning environment for their students to allow education to continue. गुरु का स्थान भगवान के समान बताया गया है, क्योंकि ये गुरु ही है जो सही और गलत की शिक्षा देकर उसमें अंतर बता सकता है। तभी तो कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अगली शानदार प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कक्षा 8 के विद्यार्थी। गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हुनर को हमारे तुमने तराशा, आँखों में झांकी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। शुक्रिया ओ टीचर, शुक्रिया। क्लासरूम जब गुम थे खोली तुमने ही खिड़कियां, वेलकम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच में अति मनमोहक प्रस्तुति थी, जिसे शब्दों में बयां करना अत्यंत कठिन है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग केवल तन को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ बनाता है। इसीलिए हमारे मित्र इस प्रस्तुति द्वारा लेकर आए हैं योग के कुछ आसन। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
That was a wonderful performance. Now, in our next performance, students of 9th and 10th standard are going to salute our Corona warriors. महामारी से बचने को तुम घर में ही महफूज रहे, कुछ ने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान बचाया है। महफिल की हंसी गलियों की सैर बाजार टहलना भूल गए, जब देश की जान पे आन पड़ी हम घर से निकलना भूल गए। कुछ सोए नहीं कई रातों से जी जान जिन्होंने एक किए, अब बदलेंगे हालात तभी जब देंगे हम भी साथ इन्हें। तेरी मिट्टी की सौगंध मुझे, मैं भी कुछ करके दिखलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। उनके जज्बे को है सलाम करते हैं जो सबकी देखभाल, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो, जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। इस प्रस्तुति ने हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान की है। जिस प्रकार इस कठिन समय में भी हमारे कोरोना नायकों ने इस समस्या का डटकर सामना किया है,
वैसे ही हमें भी हर छोटी बड़ी समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। ना डरे हैं ना डरेंगे कभी, ना झुके हैं ना झुकेंगे कभी, समस्याओं की इस बाढ़ में ना बहे हैं ना बहेंगे कभी। Thankfulness may consist of merely words, but gratitude is shown in acts. We, the Sterlingites, through this annual day, made an attempt to thank and appreciate all our frontliners. Every beginning has an end, and it's time to end our program for the day. I request Sai Kharade of 5th standard to deliver the vote of thanks. Greetings for the day. Honorable guest, Principal Ma'am, teachers, PT Executive Committee members, parents, and my dear friends. It is my honor and privilege to extend a vote of thanks on this occasion. I would like to thank our school administration for allowing me to propose the vote of thanks. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of our school, I would like to thank our guests for the day. I would like to thank the parents. Because of your support, we can pull such events. I would like to thank the students. This event was not possible without your invaluable contribution. Last but not the least, I would like to thank our teaching and non-teaching staff. Because of your hard work, the annual day has become bigger, grander this year. Finally, I will leave you all with this inspiring Sanskrit shlok. Kimitra bahuna uktena shastrakoti shatena cha dullabha chitta vishranti vina guru krupam param. Once again, I thank you all. Dhanyavad and thank you.